Good morning, 11th standard. Today we are going to discuss about the shapes and energies of atomic orbital. In my previous one video, we have already discussed about the shapes, but still we are again going to discuss it, the shapes and their energies, why the particular orbital is taking a particular one shape, that we are going to discuss. So let us start now. Fine. ठीक है बेटा, so हम start space करें. around the nucleus, within which the probability of finding the electron is the maximum. This three-dimensional space around the nucleus, where the probability of finding the electron is maximum, is called orbital. The ठीक है बेटा, so orbital is what? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, that orbital is the space around the nucleus where the finding of where the probability of finding an electron is maximum. जो ये black dotted दिख रहे हैं आपको, ये सारा क्या है? ये probability region है एक इलेक्ट्रॉन का, and this is known to as a what? It is known as orbital. probability of finding an electron is a function of distance r from the nucleus. The probability of finding an electron at a distance from the nucleus is called radial probability distribution. ठीक है, सो हम इसे क्या कहते हैं? क्योंकि जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से और ऑर्बिटल की या प्रोबेबिलिटी रीजन के आउटर मोस्ट तक जा रहा है, उसे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं. मतलब कि इतने ही एरिया में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. सो दैट इज नोन एज द, देखो अगर आप यहाँ देखो तो लास्ट तक जो मैक्सिमम जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कभी यहाँ आ जा रहा है, कभी यहाँ पर पहुंच रहा है, कभी इस कॉर्नर तक आ रहा है, इस रीजन तक आ रहा है. सो दिस इज द लास्ट वन प्रोबेबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द रेडियल प्रोबेबिलिटी. Let us look at the plots corresponding to the orbital wave function psi as a function of distance of an electron from the nucleus, that is, r, for the 1s and 2s orbitals. ठीक है बच्चे, तो ये अब साई और रेडियल, जो मैंने आपको कहा रेडियल प्रोबेबिलिटी, तो वेव फंक्शंस का एस ऑर्बिटल के लिए, बेसिकली किसके लिए? एस ऑर्बिटल के लिए, कि ये किस तरीके से बिहेव करता है फॉर 1s एंड फॉर 2s. n इज इक्वल्स टू 1 जब है तो वो 1s के लिए दिखा रहा है, और n इज इक्वल्स टू 2 जो है वो 2s के लिए शो कर रहा है. Similarly, look at the curves of probability density psi square as a function of radius for these orbitals. और यही जो है आपका ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मींस किसका? उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, या हम कहें कि वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया है, तो उसके लिए आपका वर्सेस साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ होता है फॉर 1s. The following are the important conclusions that can be drawn from these plots. At r equals 0 or infinity, that is, at the nucleus or at infinite distance from the nucleus, the probability of finding an electron is 0. The peak of the curve indicates that the probability of finding the electron at this distance is maximum. For s orbitals, the number of peaks obtained in the plots is the vicinity of the nucleus and decreases sharply as the distance from the nucleus increases. On the contrary, for 2s orbital, the probability density first equal to n minus 1. तो देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, Therefore, 1s orbital does not. यहाँ पर देखिए जो आपके रेडियल नोड्स हैं, एस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. और जैसे जैसे हमारा एन जो है एस ऑर्बिटल के लिए स्पेशल रेडियल नोड जो बनेंगे एस ऑर्बिटल में, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, तो दीज आर द नोड्स वी कैन से. Not show any nodes, whereas 2s and 3s orbitals show 1 and 2 nodes respectively. ठीक है, तो 1s के लिए नंबर ऑफ Probability density of electrons can be depicted with the help of the charge cloud concept or charge cloud diagrams. In this, the cloud of negative charge is represented by means of dots.
Note that a dot represents the location of the electron at a given point of time. The cloud of negative charge is denser in certain parts than others. This indicates that the probability of finding the electron is maximum in that region. On the other hand, the probability of finding an electron in a particular direction or angle is called angular probability distribution. ठीक है बेटा, तो एक अभी आपने पढ़ी कि probability of finding the electron from nucleus to the last या boundary of the probability density of electron है, उसको हम radial probability कहते हैं, और दूसरी probability है angular probability, जिसमें कि हम coordinates लेकर के आते हैं, x y z direction लेके आते हैं, उसके थ्रू करते हैं. ठीक है? The probability of finding an electron in a particular direction or angle can be depicted by boundary surface diagrams. ठीक है? The boundary is drawn where the probability density remains fairly constant. The region inside the boundary surface depicts the orbital where the probability of finding an electron is maximum. That is, about 90%. ठीक है, तो 90% अगर जहां पर हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो रही है, हम उसको कंसीडर करेंगे और उसके थ्रू अपनी ऑर्बिटल्स की शेप्स डिसाइड करेंगे. Alright? The boundary surface diagrams define the shapes of various orbitals. And this is showing, और this decides कि हमारी जो आपकी ऑर्बिटल की शेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए. So like s orbital is spherical हो रही है x y z डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, p orbital डंबल शेप हो रहा है, d orbital डबल डंबल हो रहा है, और अगर हम f orbital, as you can see here, that it is going having a multi directional dumbbells. ठीक है ना? So that is going to. Therefore, the shape of the electron cloud's density and that of. देखो बेटा कितना सुंदर यहाँ पे ऑर्बिटल्स दिखाया हुआ है आपका. एस रीजन जो है आपका वो सर्कुलर दिखा दिया है, स्फेरिकल है, पी जो है वो डंबल है, और न्यूक्लियस सेंटर में. अब न्यूक्लियस से और अगर डंबल्स में देखो आप, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ गैप्स हैं आपके, है ना. Here there is a gap in between it. So these gaps are the nodes. In region में हमारी probability of finding electron क्या है, 0 है. क्या है, 0 है. ठीक है? That is. Boundary surface determines the shape of the orbital. The boundary surface diagram for s-orbital is always a sphere centered on the nucleus. ठीक है, तो ये देखो, अब अगर x y z कोऑर्डिनेट्स में बना रहे हैं तो s ऑर्बिटल क्या है हमारा, हमेशा बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो होगी उसकी कैसी होगी, दैट इज ऑलवेज बी व्हाट, दैट इज ऑलवेज बी स्फेरिकल इन शेप. ओके, और फाइन. Irrespective of the principal shell to which the orbital belongs. This is because, for a given value of radius, the probability of finding the electron in the s orbital of a principal shell is found to be identical in all directions. Aspects. So, अगर हम 1. The number of nodes, and अगर हम बात करते हैं इसकी, तो s ऑर्बिटल में जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ स्फेरिकल दैट विल गोज ऑन इंक्रीज, एंड यस n is equals to, जब 1s है there will be no node, but when it is 2 then there will be one nodal region, means कि जिसमें जिस region में probability of finding electron 0 हो जाएगी. 3s के अंदर there will be the 2 nodes, 4s के अंदर there will be the 3 nodes. ठीक है? I am showing. 2. Size and energy. ठीक है, तो s orbital. As the size and energy of the principal shells increases with increase in the value of n, their orbitals also follow the same trend. ठीक है बेटा, तो साइज और एनर्जी प्रिंसिपल शेल्स का हमेशा इंक्रीज करेगा विद नंबर ऑफ एन. एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो जैसे जैसे आप देखिए
साइज भी बढ़ रहा है और इनकी एनर्जीज भी क्या होंगी, दैट आल्सो गोज ऑन इंक्रीज. For example, the size and energy of 4s is greater than 3s, followed by 2s, and then 1s. Let us now discuss the shape and orientation of p-orbitals. The boundary surface diagram for the p-orbital indicates the presence of two lobes that lie on either side of the plane that passes through the nucleus. ठीक है बेटा, तो ये पी लोब्स है और पी लोब्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अबव और बिलो आपके क्या करते हैं, पास थ्रू करते हैं. और पी ऑर्बिटल की शेप देखो ऐसी होती है. क्लियर? Giving a dumbbell shape to the p-orbital. It is giving a dumbbell shape. The shape suggests that the probability of finding the p electrons is the maximum within the two lobes. The probability density function is 0 on the plane where the two lobes touch each other. Since the azimuthal quantum number L is equal. Now, इसमें देखो बेटा, दोनों जो लोब्स हैं आपके वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और आपका बीच में क्या है, नोडल रीजन भी है, क्योंकि बीच में आपका प्लेन के और एक देखिए ऊपर और नीचे है प्लेन के. और अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इनके कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करना. ठीक है बच्चे? हाँ, ठीक है बेटा. So this is going on, okay. Equal to 1 for p orbital. The magnetic quantum number ML has values -1, 0, and +1, which represent three different orientations for p orbitals along the three axes, x, y, and z respectively. Hence, there are three p orbitals which lie perpendicular to each other. Irrespective of the direction at which the electron density lies, the size, shape, and energy of these three orbitals belonging to the same principal shell is identical. However, like s-orbitals, the size and energy of p orbitals increases with increase in the principal quantum number. ठीक है बेटा, तो जैसा हमने कहा कि आपकी जो 1s और 2s का साइज होता है और एनर्जी होती है वो विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, तो इसमें भी साइज और एनर्जी p ऑर्बिटल की दैट गोज ऑन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. For example, the size and energy of 5p is greater than 4p, which in turn is greater than 3p, followed by 2p as shown. The number of radial nodes for p orbitals is given by the expression n-2. Therefore, ये हमें याद रखना पड़ेगा. रेडियल नोड्स वी कैन कैलकुलेट विद द फॉर्मूला n-2, जबकि s के लिए जो रेडियल नोड्स कैलकुलेट होते हैं वो क्या होता है, n-1. अच्छा, s में हमारा एंगुलर नोड्स नहीं होते, देयर आर ओनली द रेडियल नोड्स. रीजन बिहाइंड, बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन शेप, और स्फेरिकल है तो उसमें कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं बनेंगे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वो वेरिएशन नहीं दिखाएगा. इट विल रिमेन सिमिलर फॉर द ऑल द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो उसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन नहीं होती. लेकिन पी ऑर्बिटल, बिकॉज इट इज अ डम्बल, वन लोब इज अबव द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन न्यूक्लियस के, तो दैट्स व्हाई देयर आर द एंगुलर नोड्स आल्सो. जैसा कि हम एल की बात कर चुके हैं कि एल एंटर हो जाता है, एंड एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम आल्सो, लाइक 2p में आपका वन नोड है, रेडियल नोड है. 3p में आपके 2 रेडियल नोड है. और अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4p, देन देयर आर द 3 radial nodes. Number of radial nodes is 0 for 2p orbital, 1 for 3p orbital, 2 for 4p orbital, and so on. In addition to these radial nodes, for np and nd orbitals, the probability density function is also 0 at planes passing through the nucleus. These planes are called nodal planes. ठीक है बच्चे, अभी हमने बोला कि रेडियल नोड्स 2p में 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0. 3p में 2 हो जाएंगे,
3p में 1 हो जाएगा, 3 minus 2 is equals to 1, और 4p में आपके 2 हो जाएंगे, that 4 minus 2 is equals to 2. तो 2 रेडियल नोड्स विल occur there, और जैसा आपको दिखाया, और ये जो हैं अब आपको दिखा रहे these are the nodal planes. वो रेडियल नोड्स थे, ये क्या है, प्लेन्स है. Now these are the planes where the finding out the plane where the finding out the probability of electron is 0. तो हमेशा नोडल वर्ड याद रखिए कि वो नोड वो एरिया जहां पर कि आपकी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0. ठीक है बच्चे. Number of nodal planes for a p-orbital is 1. That is, the plane which passes through the origin at which electron probability of finding an electron is 0 is called a nodal plane. For example, the nodal plane for py orbital lies along xz plane. Nodal plane is also called angular node, and number of angular nodes for a p orbital is equal to the value of azimuthal quantum number L. ठीक है बेटा. तो number of angular nodes is equals to nodal plane, which is equals to azimuthal quantum number, and it gives by L. For the d orbital, the azimuthal quantum number L is equal to 2. Therefore, the number of possible orientations given by the magnetic quantum number ML is 5, corresponding to ML is equal to -2, -1, 0, +1, +2. फाइन बेटा. तो ये हो जाएगी. The boundary surface diagrams pertaining to these orientations, designated as dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, and dz square are shown. Note the similarity in shapes of the first 4 d orbitals, which are different from the fifth orbital, dz square. ठीक है. तो these are the shapes of d orbitals under different coordinates x, y, y, z, x, z, and dx square, y square, and dz square. तो dz square को देखो बेटा, उसमें एक डोनट भी आया हुआ है, और जबकि अगर हम बाकियों को देखते हैं तो बाकी जो हैं वो 2 लोब्स हैं, डबल लोब्स हैं आपके above और below the plane या in between the 2 planes. Shape of dz square is donut shape. All the 5 d orbitals belonging to a principal shell have the same energies. The size and energies increase with increase in the principal quantum number. For example, यहाँ पर भी वही है कि जैसे जैसे n बढ़ेगा तो आपका साइज और एनर्जीज क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी. एज यू कैन सी हियर दैट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन साइज. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं अब d ऑर्बिटल में इंक्रीज की, सो एज यू कैन सी हियर d ऑर्बिटल, तो d में भी ये क्या कर रहा है, आपका ग्रीन कलर के हैं, एंड दैट द एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. यहाँ पे आपकी एनर्जी के साथ वो इंक्रीज करता जा रहा है. नाउ द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर d ऑर्बिटल जो होता है दैट इज इक्वल टू n-3. ठीक है. एज यू कैन सी हियर 3d में there is a 0 radial node, whereas if we are talking about the 4d, so n-3 हो गया, माने 4-3, and there is 1 radial node present in it. All right. So इसमें हमारा एक रेडियल नोड है, and if we are talking about the here the number of angular nodes, so number of angular nodes in d orbital case, it is equals to azimuthal quantum number, which is equals to 2. on dxz orbital, there are 2 nodal planes passing through the origin and bisecting the xz plane containing y-axis. Note that the total number of nodes for an orbital is given by the expression n-1. The total number of nodes is so total number of nodes जो होते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए, that is equals to L plus n minus L minus 1, और total number of nodes for a orbital
that is equals to n minus 1. ठीक है, it gives us this one, and ठीक है बेटा. So d orbital में बेटा देखिए total number of nodes as I have said to you that is equals to n minus 1. तो अगर हम 3D की बात करते हैं तो the total number of nodes in 3D orbital is 2. अगर d orbital में L जो है वो 2 है तो number of angular nodes कितने हो जाएंगे 2 और radial nodes कितने हो जाएंगे that is equals to 3 minus 2 minus 1. ठीक है, तो it is equals to 0 3D के अंदर. ठीक है. So this is all about our radial nodes and angular nodes. Now if we are talking about the energies of orbital, so increasing energy जो होती है orbitals में वो अगर हम बात कर रहे हैं monoatomic species की या the species which is having a single electron in their shells. So the energy of orbital is 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, and 4f. But if we are talking about the energies like this one, ये अगर हम बात करते हैं increasing energy, that is going to be S in the hydrogen atom represents the most stable state for the sole electron and is called the ground state. The energy states with n greater than 1 represent the excited states for the electron in the hydrogen atom. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाती है तो 1s पे उसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही होता है तो इसलिए वो ग्राउंड स्टेट है. लेकिन अगर 1s से ज्यादा किसी लेवल पर ऑर्बिटल पर वो अगर प्रेजेंट है लाइक 2s 2p कहीं पर भी चला जाता है तो देन दैट इज फॉर हाइड्रोजन एटम all these states are known as the excited state. Similarly beta unlike the single electron species, the energy of an electron in a multi-electron atom depends on azimuthal quantum number, also in addition to principal quantum number. ठीक है, इन दो पे डिपेंड करती है n और l पे. This essentially means that for a given value of n, और ये है the हमारे orbitals multi-electron. s, p, d, f possess different energies for different azimuthal quantum numbers. Now बेटा इसके लिए ऑफवा ने इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का एक लॉ दिया था which we are going to discuss in the next one video. Till that time, today we have studied about what are the shapes of energy orbital, what are the radial nodes, what are the angular nodes, as well as how the energy increases with increase in principal quantum number of different orbitals. So for today, this much is. Thank you. Just revise the topic again from your NCERT book. Thanks.